गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबको दोबारा स्वागत है। आज हम एक रोमांचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो है चाइना इंडिया परसेप्शंस एंड कंपल्शन। चाइना क्या हमारे बारे में सोचता है, उसके लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर अरुण सहगल साहब हैं। सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द शो वंस अगेन। हाउ आर यू? Thank you. एंड Thank you. Thank you very much, या sir. एंड आई मस्ट एट द आउटसेट थैंक यू कि आपने ये टॉपिक चुना। अमूमन हम अपने नजरिए से हर आदमी को देखते हैं और दूसरे हमारा जो एडवर्सरी है, कॉम्पिटिटर है, जो भी बोलो उनको देखते हैं, पर उनका क्या नजर है हमारे बारे में और उनका क्या विचार है हमारे बारे में, ये कम सोचते हैं। एंड आई मस्ट थैंक यू अबाउट दिस। वेयर डिड यू गेट दिस आइडिया फ्रॉम? always look across the border. अक्रॉस अपना द बॉर्डर। अपनी बात करने वाले लोग बहुत होते हैं। अक्रॉस द बॉर्डर की उनकी उनके नजरिए से देखने के लिए हम जरा वी आर लेस keen. So या I always try to look from across the other side. What is the other side's perception? यस How is आई he थिंक thinking about the same problem? Yeah, I think so, sir. And today, for all viewers, we're going to look at the other side of the hill, right? Like in Waterloo. Okay. आज तक जो हमने 7 चैलेंज कर लिया चाइना सीरीज में, और बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंजेस हैं और बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज आए हैं। उसके बाद एक और स्पेशल एपिसोड मैंने किया where I did got out the perspective of generals on the conflict with China, जिसमें 4 जनरल्स का व्यूज लेके जोड़ के हमने बनाया ये मंडे को, और इसका अच्छा हमें फीडबैक मिला है। और ये आज हम एलएसी के पार जा रहे हैं, एलएसी के पार और चाइना के अंदर, राइट। सबसे पहले जो आज तक हमने ये डिस्कशन किया है और इससे क्या परिणाम निकला है और क्या हमें सीख मिला है। फर्स्ट, इंडिया एंड चाइना हैव ग्रेट पावर एम्बिशंस। ये हमारी बात नहीं है, ये उनका विचार है, राइट। दूसरी बात, ये जो दिस इज इंडिस्प्यूटेबल, इंडिया इज चेंजिंग एज मच एज चाइना इज। चाइना में बदलाव हो रहा है, हमारे में भी बदलाव हो रहा है। फर्क ये है कि इंडिया और चाइना में जो बदलाव है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। वो क्या डायरेक्शन है वो हम बाद में इकोनॉमिक्स में बताएंगे, बट जनरली हमारा राइज है, उनका डिक्लाइन है। जब भी हमारा राइज होगा, इट इज एट चाइनाज एक्सपेंस, चाइना का घाटा होगा। ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में जो तनाव है वो एलएसी के बहुत पार है। इट इज बियॉन्ड बाउंड्री। अभी क्या है कि वी आर सिस्टमिक कॉम्पिटिटर्स ऑलमोस्ट। जब सिस्टमिक कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे या रीजनली और इंक्रीजिंगली ग्लोबली, तो बाउंड्री एक इट इज जस्ट अ रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट, इट इज नॉट दी कॉन्फ्लिक्ट। अगले 25 साल चाइना और इंडिया दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है अपने अपने गोल्स अचीव करने के लिए। हम सुनते रहते हैं कि 2047 तक चाइना क्या है, वो सुपर पावर बनना चाहता है, वो अपना चाइना ड्रीम रियलाइज करना है चाहता है, और रिजुविनेशन ऑफ द चाइना ड्रीम के बारे में बात करते हैं। हमें भी वही कहानी है अगले 25 साल। 2047 में व्हेन वी बिकम 100 years old, राइट, और वही 25 साल, वी नीड टू बी अ डिफरेंट कंट्री। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा हिस्ट्री में, इतिहास में कभी भी 2 पावर साथ साथ राइज नहीं हुए हैं, और वो भी जिनके तनाव है इनके बीच में और नजदीकियां में। जब इंडिया और चाइना पुराने जमाने में पावर थे, उनके बीच में तिब्बत नामक एक बफर था। अभी वो बफर चला गया, हम सीधा एलएसी के ऊपर हैं। हालांकि हमारे जो एम्बिशन, सब कुछ, टेंशन, तनाव, सब कुछ एलएसी के पार है, बहुत दूर निकल गया है, पर एलएसी है। 3200 किलोमीटर के एलएसी है, उसका मायना है, और दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस और फॉर मोस्ट थिंग्स व्हिच विल हैपन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एक और बात है,
China wants to be the undisputed regional power. जब तक वो अनडिस्प्यूटेड रीजनल पावर ना हो, वो ग्लोबल पावर भी नहीं बन सकता. एंड इंडिया डज नॉट वांट टू गिव दैट स्टेटस टू चाइना. हमें क्लियर होना चाहिए. बताते नहीं है, पर मेरे ख्याल में वी कैन नॉट गिव 1 इंच ऑल्सो टू चाइना. जब तक हम एज ए नेशन, देश पूरा ये अप्रोच नहीं लेंगे, हमें प्रॉब्लम होगा. राइट right. इसके साथ हम अभी चाइना इंडिया परसेप्शंस एंड कंपल्शंस के बारे में बात करेंगे. ओवर टू ब्रिगेडियर सहगल. सर, प्लीज टेक अस थ्रू as you want which slide to come up. I'll put it on. Okay. Thank you, General Shankar, for that excellent overview and your, initiation of the subject. And you're absolutely right. China is our absolute challenge to for India, and we have to understand one simple fact is that India and China are two major powers in Asia, and there will always be contention, conflict between us. This is something which we need to understand and respect. The second point is, so far in the series, we have looked upon China from a very Indian centric perspective. क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो हमने इंडिया के बिहाफ से उस चीज को सोचा है और अपने आइडियाज प्रेजेंट किए हैं. मैं थोड़ा हटकर आज आपको ये बताना चाहता हूं कि चाइना का क्या नैरेटिव है इंडिया के बारे में. व्हाट इज हिज परसेप्शंस अबाउट दिस थिंग. दिस इज आज की एपिसोड में. और अगली बारी कोई भी एपिसोड होगी, अगर शंकर साहब ने मेरे को मौका दिया, तो मैं अरे सर, ऐसे क्या बात कर रहे हो, ये तो आपको मौका ही मौका है. चाइना की कंपल्शंस के बारे में बात करूंगा. ओके, सो द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हाट डज चाइना थिंक अबाउट इंडिया. What is behind China's May 20 intrusion into our territory in large scale, and what is it that nearly we are, and as we enter into the fourth year, nearly the intrusion continues, and despite 18 rounds of senior military commanders talks, number of political and diplomatic dialogues, we have not any close to any resolution of the conflict. So let me just share with you some thoughts and perceptions of the Chinese on this issue. May I have the first slide, sir? What is the China's India dilemma? Relations with India are looked upon from two perspectives by the Chinese. The first is the bilateral dynamics, and the bilateral dynamics is driven by the fact is two are both growing powers. We have a different political system, but Chinese are very clear that India's rise cannot be stopped. This is something which they understand. They also understand the dynamics of population, the dynamics of India's intellect, the dynamics of India's intelligence, the dynamic of India's growth potential, and they are they are absolutely clear that India might be a slow starter, but India is going to gain ascendancy. So in bilateral dynamics, they have to look at the Indo-China equations very closely. The second point is that as the major power competition between China and US unfolds, India will be an important player. We tend to undermine India's role in the Indo-Pacific. India is a big power. It controls one end of the Indo-Pacific. It's a military power. It's got a economy of GDP of 3.5 trillion, which is going to jump to close to about 7 to 8 trillion. And the fact is that we are also a nuclear capable power and developing all sinews of strong military strategic capabilities, including strong technological capabilities. So, the whole logic of the Chinese coercion towards us is to gain psychological advantage by asserting its military and economic asymmetry. The idea is psychological ascendancy
and regional influence. I repeat, the Chinese logic of assertions against us for psychological ascendancy and regional influence. Coming to the free and open Indo Pacific, they look at it as a dangerous framework which is being put together by quad powers, and everybody knows what are quad powers are. There's United States, in India, Japan, and Australia. And they look at the whole idea of free and open Indo-Pacific as a part of China containment strategy, which will be able to dominate the rimland Asia, starting from Northeast Asia, stroke Western Pacific, through the South China Sea to the Indian Ocean. We need to recognize China is a constrained continental power. This is something people don't understand. China is a very constrained continental power purely because on the eastern flank it is constrained by the first island chain, which is dominated by United States alliance system, and on the other hand, other side is the Indian Ocean, where technically there is no strategic reach for the Chinese. Chinese have to enter the South China Sea, go through the various straits, and then project power over here into the Indian Ocean. And there it feels with a strong and credible opponent, as is India. We may not be there so much, but we are slowly and steadily developing capacities in that way. So, such an architecture has a potential in the Chinese political and strategic mindset of diluting its power advantage in Asia. That's important for their mindset. They think of these things a lot. They say that if we allow an unrestricted buildup of power potential against us, that will restrain our influence and dilute our power advantage. And that is why they have not letting go of their control over the South China Sea, because South China Sea, friends, is the entry point into the Bay of Bengal and into the Indian Ocean. Then I'll we just have show a map, sir, so that okay, you they understand it. अगर आप देखेंगे तो ये जो चाइना देखिए वो बिल्कुल गिरा हुआ है ऊपर से लेकर साउथ कोरिया, this is जापान, the first island chain. है. फाइव आइलैंड चेन और उसके बाद ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ये गिरे हुए हैं एक साइड, और और दूसरे साइड में पूरा हमारा देश है, और ये जो इधर से ये बाहर नहीं निकल सकते। जैसे जो ब्रिगेडियर साहब ने बताया, इट्स अ कंस्ट्रेन्ड नेशन, राइट, वैसे भी कंस्ट्रेंट है, और उसके ऊपर जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और ये जो कॉड का सिलसिला चला हुआ है, इसको दबा देता है, और चाइना का राइज में बड़ा बाधा आता है। यही उनका चिंता है, राइट। सो आई विल गेट बैक, सर, प्लीज। okay. Whenever you want this map, we'll get it on. Okay. So basic problem that they have is that the buildup of India's comprehensive national power and it is increasing alliance with the US or increasing partnership with US and other players will create a power differential which China and its allies will find difficult to bridge. Now, this is their main issue, and this is the most important aspect of the Chinese thought process. Next slide, please. या सो एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जो आपने बोला लास्ट पॉइंट, कि वो जब वो उनका सोच है कि इंडिया और चाइना अगर जुड़ गया, सॉरी, इंडिया और यूएस से जुड़ गया तो उनका शक्ति के बाहर होगा। ये जो पॉइंट मैं रीइंफोर्स करना चाहता हूं वो ये है कि सिर्फ दो ही मिलिट्री पावर हैं दे इस पूरे दुनिया में जो चाइना से टक्कर ले सकता है, वो है इंडिया एंड यूएसए। वो अलग अलग अपने बल के साथ वो टक्कर ले सकते हैं चाइना के साथ। अगर ये दोनों मिल गए तो दिस विल बी आउट ऑफ चाइना's रीच, एंड वही उनका डर है कि जिस दिन, अभी तो हमारा इंडिया और चाइना का सिर्फ गठबंधन जो ना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अगर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ के अगर अलायंस में बदल गया तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम होगा। सर,
The next point in their strategic thought is that out of all the major Asian powers जो हैं एशिया में, India alone has the capacity to balance China. Now this is something very important. When we say India has the intrinsic capacity to balance China, we it is important that India in the Indian Ocean and its strong comprehensive national power has the capacity to create a new front against the Chinese. What that problem that creates is that people who have to understand that so far the Chinese centricity of 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 important Chinese centricity of power is against the American in the Western Pacific and the East Asia. If India becomes a new front, he has to divide his forces. He has to divide his capacities. He does not have that capability. And please remember, it also includes an end-to-end nuclear threat. There's a nuclear challenge in the East, there's a nuclear challenge against India. He has to deal with both these ends of the nuclear threat. The second part is with the development of AUKUS and the East Asia front, the East Asia is becoming a no go zone for them. For China to project power and to keep his sea lines of communication, which are essentially his main trade routes and his resource supply routes, there he has to deal with a strong India's maritime presence. Now this is an aspect which we need to understand, while it's a great strategic vulnerability of the Chinese. Next point is in Chinese assessment, the three Quad partners rely on India to build pressure against China's assertion in the Indian Ocean. That's the point I was trying to tell you, to create a two front scenario. But the Chinese thinkers also perceive that India is the weakest link in a Quad security structure. The reason why India is deemed as the weakest link of the Quad security structure is primarily because India is not an alliance partner of the West. India is a standalone power, and Chinese leadership believe through assertions, dominations, and continued bullying, they can attempt to dominate and politically browbeat India. Something which they are now beginning to realize that that's not going to happen. It did not happen in the last 3 years. It did not happen in the past, and it's not going to happen in the future. So therefore, there is an outreach. So this outreach which you are seeing right now for India is a part and parcel of a well-conceived plan. If you can't browbeat, you pull back and you start the charm offensive. And once the charm starts offensive starts to work, you start retching up on the other side through inducements, trade inducement, more partnership, come up with new plans to induce you. But at the back of the mind, we have to understand is China looks at us as a potential challenger. And the second part of issue is that Chinese believe we are wedded to the notion of strategic autonomy and non-alignment. This is a misperception on the part of the Chinese. India's strategic autonomy is what I call an interest-based political perceptions. India will act, India will make relationships, India will create partnerships based entirely on how it sees its interests are served. And as and when we believe we are what, like the Prime Minister said, we are done away from the shackles of history. We are not shackled by any issues that you are west, you are east, you are north, you are south. No,
India will partner with every player with whom India sees its interests align and who are important for us in our strategic interests. Next slide, please. Yeah. The next perspective that the Chinese have is, and this is an interesting perspective, is that a military action against India is supposed to send a message of seriousness of the Indo-Pacific challenge and to tell both its challengers, i.e., United States and its allies, and regional players, that China is willing to escalate tensions, use military force to secure its core interests. This is very important. The ability of China to send a message that it is willing to escalate tensions and in securing its core interests is very important. Now, please remember, this is what we call a deterrence by denial, which is operational till such time the deterrence remains in place. In the next part, when we discuss various options, I will tell you that what happens when the deterrence breaks down. That's where the fun starts. Is and what we are seeing it, and you correlate to that deterrence breakdown to what is happening in Ukraine and Russia. The victories are not so easy to get. You get into slogging matches. So when one big power try to assert his ascendancy on a relatively less asymmetric power and cannot get his interests, cannot get any tactical, other than the tactical victory, its power and influence is corroded. He is no longer seen as a strong player. But important part is that in the short term, China does not see India as a primary channel, but an important one. But they also are very clear that if India is rise is left unchecked, it can be a player who can upset their strategic calculus in the medium term. They are looking at India in 2035 or thereabout as a strong, credible challenger in Asia. And by 2035, if you correlate to all your major weapon programs, your nuclear submarine programs, your long range strike capabilities, your uh, aircraft programs, you will realize by about 2035, and sadly I will not be in this world, but all I'm trying to say is by that time, by 2035, you will see a scenario where India will be a strong, credible player. Now, the problem over here is, and this is a word of caution to my friends and my friends who are listening, is that India has to develop a strategic vision. We are we tend to take power. We are shy of asserting power. We are shy of we are a sort of very defensive oriented people. But the sad part is when you have an 8 trillion economy and you have all these goodies in your bag, you will be taken seriously and you will be seen as an assertive player. Now, how do you use and leverage that power? That's something. But the Chinese are already thinking about various scenarios. I am privy to them that the Chinese have worked out a large number of scenarios on which India will not only undertake quid pro quo kind of operations, but India will assert power and influence in the region. Now, that is something which the Chinese have already started thinking about. So, Yes, when sir. I say, sorry, May I, sir? uh, So, जो आपने बताया कि वो सोच रहे हैं कि जिस दिन इंडिया का पावर बढ़ जाएगा, राइट, वो इट विल बिकम टू मच फॉर देम। और वो कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी इनके व्याख्या में आता है कि अभी से लेकर तकरीबन अगले 5-10 साल तक उनके एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि जो भी करना है कर सकते हैं।
मेरे ख्याल में यही सोच विचार है जिसके साथ वो 2020 में उन्होंने ट्राई किया गलवान में जो भी करना है, और वहां फेल हो गए। और मेरे ख्याल में उन्होंने एक सबक सीख लिया कि वो हो नहीं सकता। और उसके बाद जो यंगजी में हाल ही में जो दिसंबर में 22 में हुआ, जो घुसपैठ करने के लिए, उससे जी। भी उनको थोड़ा धक्का लगा है। सो दी दैट्स वन पार्ट। दूसरी बात जो द पॉइंट इज दैट, जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया इज चेंजिंग, सो इज चाइना चेंजिंग, एंड दे आर कॉन्शियस ऑफ इट। मेरा यही है कि दो, क्या ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म विल देयर बी अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, वन। ये साथ साथ ये भी बात है कि इवन चाइना हैज नॉट फुल्ली डेवलप्ड टू असर्ट अ मिलिट्री ऑप्शन। उनका भी ये है कि दे वांट टू बिकम अ मॉडर्नाइज्ड फोर्स समवेयर अराउंड 2027 and beyond. In fact, they'll become a semi-modern force by 2027. Only by 2030, between 35 to 47, they want to become a modernized force. So both, दोनों देश जो है ना वो ऑन द मूव है। क्या ये मेरा सोच है, और उनका भी सोच होना चाहिए। कैन दे रिस्क conflict with India, or are they going to calibrate their conflict only to message India about their superiority and show to the world that we are better than India? I mean, these are the options I think which are on the table. Absolutely correct. uh, उनकी सोच ये है कि if we can through power assertions can show to rest of Asia and the world that China is far too superior against India and India is not a player, then they have the get the advantage of a large amount of global realignment to Chinese interests, and with that part is BRI and all those issues get related. But what is sadly which is happening for the Chinese is that India is standing its ground. India is expanding its strategic space. India is building up new relationship and partnerships, starting from West Asia, in Southeast Asia, in East Asia, etc., and has today become an important player in the global system. Therefore, the Chinese suddenly find that what we thought as a balancing power emerging, that balancing power is fast emerging and it is now the fourth largest economy, fifth largest economy, is going to become fourth by the end of the year and could become the third largest by the turn of this decade. So Yes, once of you course. have a 7 to 8 or $10 trillion economy opposite you, the Mhm. balance of power is not then seen in military terms. Then It it's is on seen economic terms. economic, political, And economic, and yeah, strategic terms. yeah, So that is what we have to understand in understand. this logic. यही बात मैं, I diverted you and I digressed from your thing only for this reason. मैं जो हमें सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ ये मैसेज कि हमारा जो शक्ति है अमूमन हम अंडर प्ले करते हैं। हमें ये नहीं पता हम कितने बड़े देश हैं, हमें ये नहीं पता हमारा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर कितना है, क्योंकि हम उसके बारे में आलोचना ज्यादा नहीं करते। पर चाइना वाले कर रहे हैं, राइट। ये मान के चलिए, चाहे जो भी चाइना की तरफ से उनका सोच है, ये जरूरी नहीं है कि ये खतरा है। उनका सोच समझना अच्छा है, क्योंकि उसके बेसिस पे हम कदम उठा सकते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कूटनीति है, रणनीति है, जो भी बोलो आप, जो हमारा नीति है, इज एग्जैक्टली टू काउंटर चाइना। और चाइना जो है इसके बारे में बहुत ही सोच रहा है। मैं जब इकोनॉमी के बारे में आपको बताऊंगा और उनको पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में आपको विस्तार में बताऊंगा, आपको पता होगा कि चाइना किस मोड में खड़ा है। पर वो दूसरा दिन, राइट। अब हम वापस ये सब्जेक्ट के ऊपर ही आते हैं। सर, कैन वी गो अहेड विद द होल थिंग, सर, और यू Yeah, yeah. वुड लाइक? Next slide, please. या Okay, now let me just highlight some discourses.
चीन के अंदर की क्या सोच है इंडिया के बारे में। वो ये सोच आम आदमी की बात नहीं मैं कर रहा, उनके 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 जो थिंक टैंक्स हैं, उनकी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके जो पार्टी कार्डर्स, पार्टी स्कूल्स हैं, उनके अंदर क्या सोच है इंडिया के बारे में। तो मैं तीन स्कूल्स के बारे में बात करूंगा, तीन तरह की डिफरेंट टाइप की सोच है। एक सोच है, उसको मैं कहता हूँ हाइपर नेशनलिस्ट स्कूल है, जो कहता है कि इंडिया को सबक सिखाओ। वो कहता है कि एंड अगर इंडिया बढ़ जाएगा, इंडिया विल टेक एडवांटेज ऑफ चाइनाज अनफेवरेबल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिचुएशन। चाइना के अंदर की हालात और बाहर के हालात को वो फायदा उठाएगा। देयरफॉर, और अगर ये इंडिया को अनचैलेंज रखा, तो इंडिया जो है एक बहुत स्ट्रांग पावर बन के आ जाएगा। सो देर इज नो प्रोस्पेक्ट हमें इंडिया के साथ इन शॉर्ट मीडियम टर्म, मैंने अभी बोला अगले 10-15 साल जो भी है, वी हैव टू मेंटेन अ डिग्री ऑफ कोercion अगेंस्ट इंडिया, एंड there is no chance that in this period there will be any significant improvement on relations or a negotiated border settlement. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगले 10-15 साल जो है, ये हालात जो है बॉर्डर पे रहेंगे। इसका मतलब दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात क्या होती है, क्या इससे लड़ाई होगी? क्या इसका इस चाइना इसको इस्तेमाल करके हमारे ऊपर और कब्जा करेगा? क्या कब्जा करेगा तो क्या कब्जा करेगा? दो एक हिल, दो हिल, etc., Indian territory, fine, strategically very important, we understand that, but we have to also understand the fact is that there are no great degree of strategic or political gains that China can get from any kind of external challenge, or any threat, or any conflict situation that it creates. So this school says कि हमें अपना पाउडर तैयार रखना चाहिए, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, और इस पीर दौरान जो है हमें इंडिया को के साथ कोई सुलह करने का कोई मौका नहीं है। ये एक स्कूल है। School. दूसरा स्कूल, Can I? We can talk ओके, my views on this, sir. भैया श्योर श्योर या श्योर यार, या जो मैं मॉडरेटर बताना सर। चाहता हूँ कि इंडिया को सबक सिखाना इज ए पॉलिटिकल गोल। देखिए, चाइना को जब भी हम परखते हैं, एक चीज याद रखना चाहिए, और मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर साइगल साहब भी मेरे साथ इसमें सहमत होंगे, कि हर चीज जो चाइना करता है वो पॉलिटिकल नजरिया से करता है। पॉलिटिकल एंड स्टेट क्या है, उनके लिए लड़ाई भी जो है ना पॉलिटिकल एंड स्टेट के जरिए देखते हैं। तो क्या टीच इंडिया लेसन में, अगर जैसे उन्होंने बताया, अगर एक उन्होंने टीला ले लिया, एक पहाड़ के ऊपर कब्जा कर लिया, क्या वो पॉलिटिकली इंडिया को सबक सिखा सकते हैं? ये सवाल है। और ये हाइपर नेशनल स्कूल का प्रॉब्लम ये है कि वो अपने देश में वो किसी को बता नहीं पा रहे कि हम किस तरीके से इंडिया को एक सबक सिखा सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये ट्राई हो गया 2 बार, इन्होंने इनफैक्ट 3 बार इन्होंने ट्राई किया पिछले 5 साल में। एक बार इन्होंने डोकलन में ट्राई किया, जब वो अपना भूटान का बॉर्डर और डोकलम प्लेटो के ऊपर आने की कोशिश किया, ताकि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर झांक के देख सके, वहां फेल हो गए। दूसरे बार उन्होंने अभी ईस्टर्न लद्दाख में ट्राई किया, और वहां भी पहली बार, उनके इतिहास में पहली बार, वो 9 किलोमीटर वापस जाना पड़ा इनको अपना खुद का बंकर तोड़ने के बाद। ये पीएलए के इतिहास में 79 के बाद कभी नहीं हुआ, राइट। और तीसरी बार यांगजी में ट्राई किया, राइट। ये भी एक सबक हो सकता था, अगर यांगजी में हमारे पोस्ट को धकेल देते और उसको ऊपर कब्जा कर लेते, तो वो सबक सिखाने के बराबर ही है। वो भी नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में ये जो सबक सिखाने का कहानी है, ये जारी रखेंगे, पर ये क्या कर पाएंगे, एक इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, राइट। राइट। तो अभी देखेंगे, मैं सिर्फ ये दो तरफ की बोल रहा हूं, जो क्योंकि आप हमें जो है ना, हर एक इनका आइडिया को भी दोनों तरफ से
जांच करना चाहिए। इसीलिए मैं ये दूसरा प्रस्ताव रख रहा हूं आपके सामने। इसके ये स्कूल के बारे में मैं एक और चीज छोटी सी बताना चाहता हूँ हाँ कि प्लीज सर। this school is trying to hide the the negative impact of long standoff with India. Although there is a strong media blanket ban on these issues, but things are getting out, and that people are asking questions as to what is the advantage and what are we gaining out of this large scale standoff with India. What has been the gain? What has China gained in political or diplomatic or even in strategic terms? So the costs, we there is this, and why I'm telling you this, there is a perception that the cost is only being borne by India. The reality is the cost is being borne by both sides, बोथ साइड्स। and China आई थिंक is दैट्स अ well. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू ब्रॉट आउट सर, कि ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ दबाव हमारे ऊपर है, दबाव चाइना के ऊपर भी है। और कुछ हद तक ये मेरा विचार है, ये जो हाइपर नेशनल स्कूल ऑफ थॉट है चाइना के अंदर, ये थोड़ा पुराने विचार और पुराने ख्यालात के लोग हैं, जो सोचते हैं कि इंडिया कमजोर है और जो सोचते हैं इंडिया को सबक सिखा सकते हैं। सोच है, ये जाएगा नहीं, पर है। राइट। दूसरी बात यह है कि चाइना जिस तरीके से बदल रहा है, चाइना के अंदर भी ये सवाल उठ रहा है कि भाई इंडिया के साथ लड़के आपको क्या मिल रहा है? इतने देर से हम बैठे हैं, वो सिर्फ हमारा वहां 3,200 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर तैनात होना पड़ रहा है हमारे बच्चों को, और वो भी 6,000 किलोमीटर दूर जाके वहां तैनात होके, जो एक तकरीबन परदेश इलाके में जाके वहां तैनात होके डिफेंड करना पड़ रहा है। क्या इसमें कोई फायदा है? ये सवाल उठ रहा है वहां। राइट। राइट सर। या ओवर टू यू, Next, कैन वी? next school, या please. नेक्स्ट वन। Then there are people who are rationalist people. I call them rationalist school. They say चाइना का मेन डायरेक्शन, चाइना का मेन चैलेंज है यूएस के साथ। वी नीड टू, अगर हमने यूएस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, इफ वी वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, वी हैव टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स इन द सेकेंडरी फ्रंट, दैट इज इंडिया। उनका डर ये है कि अगर हमने इसको निगलेक्ट किया, द मेन चैलेंज को निगलेक्ट किया, तो over period of time China will be faced with the two front challenge, but they in intrinsic hostility to India remains। इस स्कूल भी कहता है कि जब हम अमेरिका के ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं, हमारे को जो है इंडिया फ्रंट के ऊपर दबाव बना के रखना है। सो अगर आप देखें कि ये स्कूल की जो थिंकिंग है और जो अभी हमारा स्टैंड ऑफ हो रहा है, और उसके बारे में अगर सोचे तो ये इस स्कूल के जो है आइडिया के साथ काफी मिलता जुलता है। मिलता जुलता ये है कि बॉर्डर को अलाइव रखो, इंडिया को डिप्लॉय करके रखो, अगेन in the notion that long term Indian deployments are cost prohibitive for a country like India, and India will start weltering under the pressure, economic and the political pressures. The problem with the Chinese is this, and intelligent Chinese are understanding this, that this is something which is simply not happening. And India today, by the hard work of this country and and our resilience, is today the most rapidly developing economy in the globe after COVID. So so this is becoming a negative factor in their thinking. सोच है, परंतु उसके अंदर एक डिबेट शुरू हो रही है कि हमें इसका फायदा क्या हो रहा है। और अगर हम इंडिया के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो हमारा जो मेन चैलेंज है, जो हमारी जो ग्रेट कंपटीशन चाइना के साथ, अमेरिका के साथ बढ़ता जा रहा है, हम उसके ऊपर से
हमारा जो है नजरिया हटेगा। और अगर नजरिया हटेगा भी नहीं, परंतु हमारे को दो फ्रंट को साइमल्टेनियसली कोप करना पड़ेगा। डू वी हैव द कैपेसिटी? And my personal belief is the PLA lacks the strategic competence to even look into a two front war situation or even develop capacities and capabilities of doing this. Yeah, Because I do not believe that the Chinese military capacities, capabilities, which are floated in the glossies of the global world, are really as earth shaking or as advanced as they are made out to be. They are all in the stage of development, and that development cycle is still about minimum 1 to 1.5 decade, if not 2 decades away. राइट सर, जो आपने जो बोला है, आई टेक इट कंप्लीटली। इसको मैं थोड़ा एम्पलीफाई करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर हम if you look at the way the Sino-Indian relations have developed and the conflict situations have evolved पिछले 5-6 साल में, आज तक जो हावी है चाइना में वो हाइपर नेशनलिस्ट थॉट है। और वो जो हाइपर नेशनलिस्ट थिंकिंग के मुताबिक उन्होंने जो भी एग्रेशन किया है, उसके जरिए आई थिंक चाइना इज ऑलरेडी इन अ टू फ्रंट सिचुएशन ऑलरेडी, राइट। ये जो क्वाड बनना ही ऑलमोस्ट इज अ टू फ्रंट सिचुएशन। अगर आपको याद है 2020 में तो क्वाड का सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हुआ ऑन द साइडलाइंस ऑफ वन ऑफ द अदर मीट्स जापान में, और उसके बाद अभी क्या है कि क्वाड इज ऑलमोस्ट फॉर्मल। So they are already in that situation, and I believe that this policy, they have, I think it's a very logical policy अगर वो adapt कर सकते हैं कि भाई वो चाइना के ऊपर if they can concentrate and hold India and just इंडिया के ऊपर दबाव बना के रखो। बट जैसे आपने बताया, मेरे ख्याल में जो फर्स्ट पॉलिसी और ये सेकंड पॉलिसी, दोनों पॉलिसी के लिए टाइम चला गया। और जो आपने बिल्कुल सही बताया, ये भी मेरा अनुमान है, राइट। ये एंड आई हैव, मेरे को कोई डाउट नहीं है कि आज के दिन चाइना हमें उस तरीके से मिलिट्री लेसन या मिलिट्री डिफीट नहीं कर सकता जिस तरीके से सोच विचार है चाइना के अंदर, बाकी दुनिया के अंदर, और हमारे देश में ही कुछ हिस्सों में, राइट। बहुत कारण है। आपने बता दिया कि अगले 10 साल तक, 10-15 साल तक चाइना के पास वो हालत नहीं होगा, दे विल नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू अंडरटेक सच मेजर ऑपरेशन, Large scale मिलिट्री deployment of ऑपरेशन, advanced weapon system मास्टर is not going to happen for next 10 to 15 10 years. to 15 ईयर्स। मेरे Yeah. ख्याल में ये अगर अगले 5 साल में नहीं हुआ, अगले 5 साल में नहीं हुआ तो ये कभी नहीं होगा। इसके लिए कारण ये है, दो कारण है, दो मूल कारण है। एक तो इनका इकोनॉमी घट रहा है और इनका इकोनॉमी को वापस लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका देयर इकोनॉमी इज हेमरेजिंग। तो असलियत है चाइना के अंदर हमें बाहर नहीं निकल रहा है। दूसरी बात है, इनका जो एजिंग हो रहा है और इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, और इनका जो डेमोग्राफिक पैटर्न है, क्योंकि हम सबको पता है कि चाइना में हर हर आदमी वो इकलौता आदमी है। चाइना इज अ फनी नेशन विच डजंट हैव अ ब्रदर और सिस्टर। इट्स अ फनी नेशन। जितने भी 50-60 साल से कम उम्र के हैं वो इकलौते हैं, किसी को कोई भाई बहन नहीं है, इनको पता ही नहीं भाई बहन क्या होता है, राइट। और इनके जो फौज है इनके उतना टफ नहीं है, क्योंकि इनके जो हम पढ़ते रहते हैं कि ये दे आर रिड्यूसिंग फिजिकल फिटनेस लिमिट्स टू गेट पीपल इनटू द आर्मी आल्सो एंड आर्म फोर्सेस, और इनके कमांड लेवल में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एज दे आर एक्सपेंडिंग। सो अगर हम देखेंगे, अगर इसका स्ट्रेटेजिकली जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, बट इफ यू गो इनटू द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ पीएलए वो भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बट माय व्यू, दिस इज माय व्यू सर, एंड वी माइट लाइक टू थिंक अबाउट इट, दैट देयर इज अ विंडो विद चाइना फॉर द नेक्स्ट 5 years. After 5 years it will be too late, and that window will also, आज के दिन वो बंद है।
क्योंकि जिस तरीके से चाइना के अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं आज के दिन बंद है। अगर वो स्टेबलाइज करके अगले 2-3 साल के बाद वो विंडो तभी खुलेगा अगर उनका कैपेबिलिटीज बढ़े और हमारा कैपेबिलिटीज कंपैरेटिवली ना बढ़े, तो उनको एक विंडो मिलेगा 3-4-5 साल। आई एम सेइंग 5 years, इट कुड बी 6-7 years। तो 3-4-5 साल के बाद, उसके बाद देयर डिक्लाइन विल स्टार्ट एंड दैट विंडो विल क्लोज। सो टू दैट एक्सटेंट ये जो आप बोल रहे हो, दिस रैशनलिस्ट स्कूल हैज ट्रमेंडस वैल्यू, बिकॉज जो हम बोल रहे हैं चाइना में भी इनको सबको पता है, और देयर एम इज यूएस। सो विल दे get to this or stick to the hyper nationalist or go to your third option जो हम discuss कर Yeah, सकते हैं? yeah. Let's We go to can the talk. third option. We'll Yes, get to the third quickly, option. quickly, quickly. I'll go to Yeah. the third option. Uh, this is what I call a rationalist school. And this rationalist school basically says is teach India kind of thinking is very short-sighted. It is India's relationship, China's relationship with India are as important or second only to the United States. Decoupling would strengthen anti China alliances in Asia. Best strategy is to bide time while continuously maintaining pressure and seeking bilateral cooperation. Bottom line, जो आजकल करने को कर रहे हैं हमारे साथ कि हम आपसे बायलैटरल रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, बॉर्डर सिचुएशन ठीक हो गई है, नॉर्मल हो रही है, आप उसके बारे में हम अब बातचीत करते रहेंगे, but let's get on with the bilateral relations, improve our bilateral relations. And the whole strategy is basically is that keep India engaged. Their worry is decoupling of India from the will only strengthen anti-China alliances in Asia, and this is a thinking which is very strongly prevalent in China, in what I call our thinking circles, the guys who are moderate circles, and they believe that it is best to continue with this policy of engagement, and that is why you see for the second time. Our first time was when the foreign ministers meeting took place of G20, and now coming for the SCO meeting in next couple of days, you will find tomorrow, day after, you will find that the Chinese foreign minister will also have a polar side with our foreign minister. And here again, interestingly, the stage is being set for Xi Jinping's visit to India in July for the SCO summit. Uh, Now, this is where we have to be very, very careful about these little nuggets thrown on us by the Chinese to overcome the immediate problem and then go back to the old policy of coercion. So we have to, and I think Defense Minister Rajnath's statement was very, very clear to the Chinese Foreign Minister, sorry, Defense Minister, that we cannot move forward till such time we have solved our problem, and we have to start respecting all the confidence building measures which we negotiated so seriously and with so much of patience and dexterity. So the point is, जो बात निकल आ रहा है वो ये है कि ये जो आजकल का चाइना का रवैया है, इट इज बिटवीन योर सेकंड एंड द थर्ड ऑप्शंस। Yeah. मोर वियरिंग टू द थर्ड ऑप्शन, राइट, द रैशनलिस्ट ऑप्शन, कि भाई इनके साथ इनको हम परास्त नहीं कर सकते हैं, राइट, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और देखिए, जो पॉलिटिकली इंडिया इज इंपॉर्टेंट, अगर पॉलिटिकली इंडिया के साथ इनका कटपिट हो गया, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके जरिए दे वांट टू डेवलप एन अल्टरनेट सिस्टम टू द यूएन इन सम मैनर, एंड द ब्रिक्स ब्रिक्स में De-dollarization. डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, वो अगर ये दोनों में अगर इंडिया का अगर रुख बिल्कुल उल्टा हो गया, तो ये तो गए, राइट। सिर्फ हम ये पूरी बात सिर्फ एक नजरिया, यानी कि लड़ाई के नजरिया से, मिलिट्री नजरिया से नहीं देखना चाहिए। डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल नजरिया से अगर जब हम देखेंगे, तो ये बड़ा पिक्चर जब उभर आएगा, तो हमें पता होगा ये लड़ाई के लिए एक तो तैयार है ही नहीं, और इनकी काबिलियत भी नहीं है, और तीसरा दे कैनॉट अफोर्ड दिस, दे कैनॉट अफोर्ड। जैसे इसीलिए मैंने बोला, एनीथिंग टू डू विद चाइना, सबसे पहले पॉलिटिकली उसको विश्लेषण करना चाहिए।
Yeah, अगर next. पॉलिटिकल, हाँ सर, Sorry. Sorry. Carry on. I'm हाँ, listening, sir. जब पॉलिटिकल विश्लेषण अगर सही है तो बाकी सब अपने लेवल में बैठ जाता है। और पॉलिटिकल विश्लेषण यही कहता है कि ये सेकंड या थर्ड ऑप्शन के बीच में ये टहलते रहेंगे। और ये बात जो आज निकल आ रहा है, इट ओनली रीइंफोर्सेस जो पहले जो 4 जनरल साहबों ने बोला था और जो स्पेशल एपिसोड में बोला था हमने, कि इंडिया और चाइना के बीच में किटपिट चलता रहेगा, टेंशन नहीं बढ़े, कम होगा। और बात जो है एलएसी के बाहर है, एलएसी के परे है। Yeah. हमें हमारा नजर जो है सिर्फ अगर हम एलएसी के ऊपर टिके रहेंगे, जैसे मैं ये चैट बॉक्स में भी देख रहा हूं, बहुत सवाल ये है कि क्या लड़ाई होगा इंडिया और चाइना के बीच में। अगर लड़ाई और एलएसी के ऊपर ही हमारा नजर टिका रहे तो हम बड़ा पिक्चर को विल मिस द स्टोरी। No, exactly. Good point. We need to look at the conflict situation from a larger picture, not make conflict situation into a larger picture. Correct. Look at the Right? other way. I think that's the first best thing you said. Don't make the conflict picture the largest situation. Make the look at the largest picture with the conflict situation as part of that picture. Yes. That's the, I think, the most important takeaway from me, sir. Thanks a lot. और जब तक हम ये पूरा जो चाइना चैलेंज का सीरीज है, यही मेरा उद्देश्य है। चाइना को एक बड़ा नजर से, दूर दृष्टि के विजन से देखना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि चाइना के क्या ताकत है और क्या वीकनेस है। ऐसे बात नहीं है कि वो सबसे बड़ा ताकतवर देश है, नहीं है। आजकल वो टूट रहा है, यकीन मानिए हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। Can I have राइट? the next slide, sir? या सो आई इधर मैंने सिर्फ आप एक ये संक्षेप से बताया जो अभी हमने बात करी है, और जनरल साहब ने उसको काफ़ी अच्छी तरह से सम अप किया है। मैं ये जो है उसको थोड़ा संक्षेप से मैंने लिखा दी। इस सब नज़रिए का जो निचोड़ ये है कि चाइनीज सोचते हैं कि कोई उनको फ़ायदा नहीं मिलने वाला अगर हम अपना जो है इंडिया से दबाव कम करें। No tangible benefit of giving up leverage over India. So, continue to maintain psychological pressure to force India to protect its territorial integrity against China. Make India focus its political, economic, and diplomatic energies on LSE. Undermine maritime potential. LSE, to my mind, is a secondary direction. Maritime or Indian Ocean region is the main direction. The next point is wants Indian neutrality in US-China strategic competition, hence trade and engagement. They want some degree of neutrality. They don't want India to become an alliance. They are happy if India becomes a strong partner of the United States, but they do not want India to become an alliance partner. And to that extent, they will continue to do trade, engagement, and all kinds of ruses will be used. Then resolution. The last point is resolution of border conflict cannot take place because it will open much deeper doors for alignment with the United States. And when India does not have to have a military standoff on the north, the standoff in the west will also reduce. And once India's military capacities will then get redirected to a different direction. That's the important point which they think of themselves. And therefore, they believe that the strength of the US India relationship will become even much stronger. Then India can then become, in their thinking, please, I repeat, in Chinese thinking, could become a credible interventionist in any conflict which they have with in the east or with in South China Sea and East China Sea. So this is something which is in their mind. Please understand this. We might think it is stupid. We might think it's too far fetched, but strategists need to look at these things in perspective and see how things happen. This is not the time to highlight. If you see your own weapon system development cycle, which is going on right now, it indicates a certain very different, very interesting facet of our this thing. We are developing large amount of long range capabilities.
Please see that. Why are we developing long range capabilities? There's a method in this madness. So this is something which I just thought I will highlight to you. What is the impact on of border settlement? What the Chinese feel will be the impact of border settlement, and why you will not find a border settlement in a hurry. They will try and extract. Next is next. आगे चल ले, next way. Next they feel is that India weaken militarily and economically, its value as a counterweight. उल्टी बात है, अगर इंडिया वीक हो गया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. They are also conscious कि वो पार्टनर नहीं है. So that's what China is so using. And my last bullet point की मैं बात कर रहा हूँ. What is called muscular revisionism. अब हमारे जो नेबर हैं उनको मुचोड़ रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं to become against India. And that is why you find this corridor. So, sum total of the strategy is maintain continuous pressure on India, albeit in different proportions. General Saab ने भी बोला इसके बारे में. Weaken India through combination of military pressure, exploiting its social, political differences, regional strategic encirclement, collusive partnership with Pakistan, and converting Indian Ocean as a sector of Chinese dominance. In other words, the Chinese strategy is, and I like to repeat this, is targeting gaining a comprehensive and overwhelming geopolitical and strategic advantage which cannot be altered by war. That is what they are trying to do. And as we have discussed, they are not succeeding very much. And that is something which we need to take cognizance of. But we must remember one thing, कि चीन जो है एक कॉम्प्रहेंसिव एंड ओवरवेलमिंग जियोपॉलिटिकल एडवांटेज हमारे से लेने की कोशिश करेगा, और विच विल बी सच एन एडवांटेज पाकिस्तान में आके, बांग्लादेश में आके, नेपाल में आके, इंडियन ओशन में आके, द होल आइडिया विल बी एन geopolitical and strategic dominance which cannot be altered by war. Something which we have to be cognizant of. And like I said, LAC is one direction. The the more important direction by from 2030 onwards would be the maritime dimension. Thank you. Thus, overall strategy. Resultantly, China in short to medium term will persist with multi-domain threats as a policy of Indian containment. Two things will persist: military build-up and pressure along the LAC, and simultaneously continue to build up in the ocean, Indian Ocean, to create two front scenarios. Chinese extension of anti-access and area denial strategy in selective pockets of IOR can be expected. सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, और ग्वादार में उसने DF-26 लगा दी और DF-21D लगा दी. It will have a serious repercussions on our strategic sea lines of communication from where our energy resources come. Equally, if they deploy them on the east coast of Africa, in Djibouti, or in the new their partners in Iran, then we have a similar kind of problem. These are not issues that will take place today. These are not issues that take place tomorrow. But these are issues will come under contention in 27, 28, 29, 30. And India has to start planning for these contingencies. I finished here. Thank you for your थैंक्स अ attention. लॉट सर. मैं सबको सिर्फ बताना चाहता हूँ, हमारा जो पार्ट 2 है बात होगा ये तकरीबन 18th या 20th के बाद बात करेंगे, जहां हम ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस ऑफ कंटिन्यूइंग स्टैंड ऑफ एट एलएसी. एलएसी में जो हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि एलएसी है वहां तो चल रहा है स्टैंड ऑफ, उसका क्या परिणाम होगा, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका के बारे में हम बाद में बात करेंगे. Right? We'll take on a few questions, sir, with your permission. Yeah, sure. Right? Yeah. Jawaharlal Bansal says India will not lose side with America against China. Some analysts are saying, sir, give your opinion. Sir, yours, all yours. We are not taking sides with America, but America will be a strong strategic partner with any uh, conflict with China. And be rest assured, India will not fight shy of taking weapon systems and support from Americans. But the perception that India will have American boots on India's ground is nonsense. Similarly, we will also calibrate of what kind of assistance we want to give to the US
led alliance system in the Northeast Asia, Western Pacific, or any contingency in South China Sea, that will be deliberated and calibrated depending upon how do they impact uh, our interests. So it will be an interest based support, like America will support India based on their own interest to ensure the credibility of India as a challenger to China remains intact. Similarly, we will also do an interest based support on the level amount that we are capable of doing to ensure that the Chinese get embroiled and get a get a downside of any conflict in that region. So essentially speaking, it's not us or there. India will support there. India will do that. I know you're talking to Ashley Tellis's article, and I, frankly speaking, I have had a personal interaction with the gentleman. It's a thought process. It's a thought process, and there is an establishment in the United States who thinks like that. But I am sure I put on my recent discussions with our American and Australian friends on our technological cooperation thing. So they will realize that it is not simply a thing about militarily supporting each other. We are already in a big way in trying to build up a strong technological and emerging technologies cooperation with our other two friends, Australia, Japan, and the United States. सिर्फ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सबको, ये जो लिखते हैं, जो एनालिस्ट लिखते हैं, वो उनका विचार है और उनका एक एकेडमिक विचार है और एक स्ट्रेटेजिक विचार है, पर एक्चुअली जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग होता है और एस्टेब्लिशमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट डीलिंग होता है थोड़ा अलग है। तो इस दोनों का थोड़ा फर्क पहचानना इम्पोर्टेंट है। ओके, Jack Sparrow says, would China be that foolish to engage in a small war with India, especially when they have not been able to prove their worth on the battlefield? Uh, Mr. Sparrow, you'll have to wait for the second part of our discussion, Yeah. where I will be talking about the imperatives, the downsides, the upsides of a possible conflict scenario with India, and its their larger geopolitical implication. See, General Shankar has put the thing in a very interesting perspective. He's trying to highlight the fact, and I agree with him totally, is that you cannot situate a small conflict in a larger geopolitical context. You have to situate geopolitical context in a smaller conflict. So the smaller the conflict will have to have a much larger implication. Will China be able to do it? What China army is doing it, capable of doing it? It will be a thought process based in Beijing's calculation and how do they perceive Indian power and influence at that particular point in time. One thing Beijing is very clear about, that Indian political leadership and Indian military leadership are very strong and are not going to get unnecessarily bulldozed by the Chinese intransigence. We might be doing things to a lot of people feel that we are being very defeatist or defensive. That's not the point. The point is you escalate with the larger strategic objectives. You do not escalate to pick up, collect some rocks and say, I've got this little hill, and now my flag is flying over there. So what? You do not get your nations involved into a war. And that's the dilemma the Chinese have. And I'm answering your question directly. The Chinese dilemma is, what do they get out of a conflict with India which ends in a stalemate or a small little tactical victory? Where are they going to take it? Basic question would be, Chinese launched major offensives, Chinese did this, Chinese brought 200 tanks, etc., etc., etc. And what do they get at the end of it is nothing. They lost 2,000 people. Though casualties that take place in a kinetic war, sir, cannot be hidden by Bedu. That they will be seen all over the world. So this is something which the Chinese realize that. So Chinese are not stupid enough, as we have discussed the whole evening today, to escalate into a war situation just to teach India a lesson. Yeah, I just want to add
Look, war is a risky affair. There is no small war or big war. We don't know when a small war will become a big war and when that war will never stop, like it's happening in Ukraine. Okay. So there are very, 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 very deep calculations before China and India have to go for war. And the evidence so far is Xi Jinping is a risk averse person, right? Again, you have to look at it politically. His calculation will be I should win a war and continue to be in power. If these two things don't happen, the war will never take place. Just remember that always. Okay. Ask the sir, the short to medium opportunity up to 2035 you mentioned. I see this as an opportunity for us to destabilize China. He's turned the question around, sir. See, it's no question of destabilizing China, etc. Basically, we want to get our back of the Chinese. We want to tell the Chinese it suits our both interests that if we can live in harmony and in cooperation together, and for a better Asia. Number one. Number two issue is that if we can have a strong dissuasive deterrence in place, India can continue with its job of economic development, looking after our people. We are already the world's largest populated country. We need to spend a lot of money to upgrade our people. We need to upgrade our capacities. We have to upgrade our manufacturing. So we have a huge lot of tasks to do. So the question is, if we can reach some kind of a modus vivendi in which we shrug off contestation and conflict and develop a more cogent relationship based on principles that we have discussed. And I go back again that you cannot abuse the treaties or the agreements that you have gone into and then start asking us to restore normalcy in the relationship. You cannot do that. That's not a given. So come to the table, discuss, go back to where you came, and then we can have a peaceful relationship. We already have a $135 billion trade. Let it go to $200 billion trade. It'll be good for everybody. John Perkins says, sir, any chance China is purposely showing themselves at weak at LAC, attacks to surprise us at a later time? Uh, Sir, this is a tactical issue, but I am sure we are smart enough to understand what is happening. We have a totality of a picture on the LSE. Uh, I don't think I don't think Chinese are showing themselves as weak. It's just that the Chinese have a limitation of capacity and capability, and the Chinese also have a limitations. Please remember one thing: uh, to fight or to have a standoff situation with two nuclear powers, one in the east with a strong capacity, and try and think of a Taiwan situation, and then simultaneously having a friction with India and thinking that you will have a war with India, I think is asinine. So the last question is a bit of a thing. I mean, he says Pradeep says my son asked me when will we get Aksai Chin and POK back, and believe me, I feel embarrassed as I do not have an answer. So, well, Okay, you don't have to feel embarrassed. It's the question is we do not have to get Aksai Chain or the POK back. My personal view is improve relationship so that we can travel to Aksai Chain and POK without having to having a sort of a bad relationship with both the countries. So I think it's a more. I think don't think geographical spaces are so much beyond. They are part of a political rhetoric, but in terms of real world, it is easy to improve relations where you can have a free access to these exotic places rather than having to call them as an Indian or a Pakistani. It's just like you travel anywhere else in the world. Travel to POK. I think it's a good idea to go to POK. It's a good beer to get over there. So it's a, it's a thought process. I mean, you can't occupy in this day and age as we are watching what is happening in Ukraine.
capture of territory is a very, very difficult issue. It's not something a countries can do and get away with it. Please remember also what we did in Bangladesh. We created, I mean, we helped fight the Mukti Bahini, and the Bangladesh was created. We were out within 6 months. We did not stay there. So we are conscious of the fact that POK and Excision, yes, they were once upon a time ours. The question is, today, do we have to fight for them, or do we create conditions so that we can visit them and enjoy them? The last question, sir. If we get into conflict with China by 2030, is our military industrial complex going to get ready by then? Because if we lose a Rafale Su-30, we depend on other countries to get new ones. Uh, You can answer that, sir. I mean, yeah, I think yeah. Well, look, I'll take it on, it's sir. ready. Look, It's a pro. Is something which is going on. It's in progress. You will be ready, and I think we would have between the two, Rafael. We will probably have some kind of a capacity to handle these things in intrinsically in India by 2030, look, including engines. like what Brigadier Sehgal had said earlier, there are plans afoot that to increase our military capacity and with some thought, right? So don't worry about these things. I think we have more than enough capacity. And you're talking of 7 years hence, 8 years hence, then things will change drastically by then. Right? All these things have a tipping point. It's that critical mass which you reach. Once you reach that critical mass, a lot of things change. And believe you me, I've seen this critical mass changing in certain aspects in my life. I saw it changing, in the missile development program. I was part of the missile development program. In fact, I have had the great opportunity and good luck to have worked with Dr. Abdul Kalam. I saw this change in the entire missile program. I was part of the first launch of the Prithvi missile and the Agni missile. And this happened in '88. In fact, that was the year when my son was born. Right? Today, where we are. I've seen the second change happen in my service towards the end of our service. Today, we are completely self sufficient on guns, ammunition, and all that artillery. If you go back 10 years, just 10 years, we were not so. So, this critical mass, the critical period comes when things change drastically. And that thing, I think, we have always been good at making our own ships. We are getting onto submarines. We're also getting onto aircraft. You have the Tejas, right? That will also reach its critical point where things will become completely Atmanirbhar. Have faith. Right? We need to have faith in ourselves and we'll have it. I have faith. I might criticize the system to improve it, but we need to have faith. Right? I think we've had a great session, sir. And I thought we got some very good questions also. Right? Excellent question, sir. Excellent. Excellent questions. I think we need to give credit to our audience, such good audience who have come up with such great questions. Come up with some great questions like this, and we'll take time to answer. The time is of no consequence to us thereafter, right? And I think overall today we had a tremendous thinking process. It's completely different from the normal. Will we go to war phenomenon? Right? Or I'm glad no one said, "What did you do in the war, Daddy?" Right? We're not, we got out of that thinking. We're looking at something big. And as a rising nation and as a global power to be and a regional power, definitely, we need to think differently and we need to think big. And that's what came out today. And so, thanks a lot for this Thank great you, sir. thing. And I look forward to the next interaction with you because we have to take this whole thing one level higher. Thank you, Thank you. sir, and good Thank you, sir. evening, and Jai Hind to everyone. Jai Yeah, Hind. Jai Hind. India is great. Yes, sir.